गो। तो सेल साइकिल सेल डिवीजन पार्ट 2, इसमें आपका स्वागत है। मैंने पिछले बार आपसे ये कहा कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा पूरे सेल साइकिल सेल डिवीजन में, आपसे 100 क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे लगता है कि मैं वो 100 क्वेश्चन का जो कोटा है वो पहले ही पार्ट में ख़त्म कर चुका हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आई एम रेडी विद मोर क्वेश्चंस। यू शुड बी रेडी विद इमीडिएटली गिविंग आंसर्स टू देम। सो अब अपने आप को ट्रेन कीजिए। इस टाइम में बहुत बढ़िया आपकी ट्रेनिंग करा रहा हूँ। आपने सबने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर को, आप मेरे साथ देखिए कितनी तेजी से आप आंसर दे पा रहे हैं। बीच बीच में आप पॉज कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि सोचने की जरूरत है, वहां पे पॉज कर दीजिए। दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ वॉचिंग वीडियोज एट योर कन्वीनियंस। आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। सो दिस इज वर्चुअली मतलब एट योर हैंड्स द स्पीड दैट यू वांट टू स्टडी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा बढ़ाइए, जल्दी से आंसर दीजिए और ये देखिए कहीं एरर तो नहीं आ रहा है। और अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो ये एरर होने की संभावना हटती चली जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, मैं हेडिंग जरूर डाल देता हूं, और इस बार भी मैं कोई कंसेप्ट आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा धीरे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन की स्पीड थोड़ी धीरे करूंगा। पिछला टॉपिक ज्यादा आसान था, इसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा धीरे धीरे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। मुझे पहली चीज तो ये बताइए कि वो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस मियोसिस क्या बताएंगे आप? अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं, गिव मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, व्हाट विल बी योर आंसर? अब मैं इसमें दो चॉइस दे देता हूं आपको। एक, मेंटेनेंस ऑफ अ क्रोमोसोम नंबर, मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर अक्रॉस द जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। दूसरी तरफ जनरेशन ऑफ वेरिएशंस या क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस विच आर द रॉ मटेरियल फॉर नेचुरल सिलेक्शन एंड हेंस वेरी इंपॉर्टेंट इन इवोल्यूशन। दोनों सिग्निफिकेंस है मियोसिस की। अब आप ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि अगर दोनों चॉइस में आ जाएं तो वो कौन सी है जिसे आप सबसे इंपॉर्टेंट बताएंगे? सो एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए दूसरा एक और काम करते हैं। तो देखिए मियोसिस में मुझे बताइए कौन से सेल्स में मियोसिस होता है? मुझे यह बताइए कि क्या आपको आपकी एनसीईआरटी भी एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स पता है? हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, क्या आपको यह पता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? डू यू एग्जैक्टली नो कि इन तीनों तरह की लाइफ साइकिल में कहां पर माइटोसिस होता है, कहां पर मियोसिस होता है? आर यू एब्सोल्युटली श्योर अबाउट इट? याद करिए, रिवाइज कीजिए उसको। इंटेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का। माइटोसिस कहां हो रहा है, मियोसिस कहां हो रहा है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। दोनों सेल डिवीजन्स के बारे में पढ़िए। व्हाट एग्जैक्टली इज गैमेटिक मियोसिस, व्हाट एग्जैक्टली इज स्पोरिक मियोसिस। ये शब्द आपको बड़े क्लियरली डिफरेंशिएटेड होने चाहिए। पहली चीज तो ये, क्या आप जानते हैं कि इसमें बेसिकली हमारे पास एक 2C2N सेल होगा और हम लास्ट में हमारे पास हमको 4 सेल्स चाहिए जो कि हर एक C और N ये इनका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी वांट। और इसीलिए यू नाउ टेल मी व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द सक्सेसिव सेल डिविजन्स। कितनी बार सेल डिवाइड करेगा ये ताकि ये बने? सो आपका आंसर है, मुझे पता लग गया कि देयर विल बी 2 सक्सेसिव सेल डिविजन्स। वन इज कॉल्ड एज meiosis 1 and the second is called as meiosis 2. Do you know that why meiosis 1 is called as the reductional division? Why meiosis 2 is called as an equational division? And what exactly is the difference between the two? So basically ये बात बड़े ध्यान से समझिए कि 2 सक्सेसिव सेल डिविजन्स हैं सिंगल राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में। तो एक राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव राउंड्स ऑफ सेल डिवीजन, जिसमें पहले सेल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो रहा है, दूसरे में इक्वेशनल डिवीजन हो रही है, लेकिन डीएनए कंटेंट कितनी बार रिड्यूस हो रहा है, इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूं। सो मैंने आपको इतनी बात बता दी कि मियोसिस 1 से पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद में 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन होंगे। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होगा, मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगी। और आपने मुझे बताना है कि डीएनए कौन से डिवीजन में रिड्यूस होगा। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। आर यू एब्सोल्युटली श्योर अबाउट द टर्म दैट इज टू बी यूज्ड फॉर द पीरियड बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2? व्हाट एग्जैक्टली इज द टर्म? इस क्या टर्म है जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो गैप आता है, उस टर्म को क्या कहते हैं? और 2 सक्सेसिव माइटोसिस के बीच में जो आता है, आप जानते हैं उसे इंटरफेस कहते हैं। और इंटरफेस और ये जो टर्म आपके दिमाग में आ रही है, इसमें
क्या फंडामेंटल डिफरेंस है? व्हाट एग्जैक्टली इज द फंडामेंटल डिफरेंस दैट विल एक्चुअली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड गैमेट्स? क्या ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से आती है कि नहीं आती है? पहली चीज तो ये समझ लीजिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात याद रखिएगा इस बात को। और दूसरी चीज ये याद रखिए कि जब हम मियोसिस 1 की बात करते हैं, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। सो मियोसिस 1 पर हम अगर सीधे क्वेश्चन करें तो मुझे बताइए कि विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस 1। दूसरी चीज, प्रोफेस 1 की 5 सब स्टेजेस कौन कौन सी हैं, उनकी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताइए। सो यू नो, बोलिए, लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैकिटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर डायाकाइनेसिस। लेप्टोटीन में डू यू नो दैट द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन एक्चुअली बिगिंस एंड दे आर फाउंड अटैच्ड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाय एन अटैचमेंट प्लेट? व्हाट एग्जैक्टली इज द सिग्निफिकेंस ऑफ देम बीइंग अटैच्ड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन by an attachment plate? What exactly is a synaptonemal complex? What it is made up of? Synapses किसके बीच में होता है? What exactly is a bivalent? What is the difference between a bivalent and a tetrad? So what exactly is synaptonemal complex? What is a bivalent? What exactly is a tetrad? What are homologous chromosome? Does the pairing occur between X and Y chromosome as well? And should the synaptonemal complex must be formed in all the pairs all along the length of the chromosome? If it does not happen, what would be the consequences? Why sterility is very common in chromosomal aberrations? All these questions must be related to the synaptonemal complex. And do you know what exactly is a procentric, pro-terminal or a random formation of the synaptonemal complex? So very, very important stage, zygotine. And this event, these are that are occurring in the zygotine, do not occur in mitosis. Do you remember this? They do not occur in mitosis. So once more, the questions of zygotine: what exactly is synaptonemal complex? What are lateral elements? What are transverse elements of synaptonemal complex? What it is made up of? Where does the formation of the synaptonemal complex begin? Is it in various ways that it is being formed? Which of the chromosomes are actually aligned with each other? What are the homologous chromosomes? Do X and Y chromosome also have the formation of synaptonemal complex between them? What is the relationship between synapses and the fertility? What is the problem if the synaptonemal complex does not form all along the length of all the homologous chromosome? ये सारे क्वेश्चंस आपको जाइगोटीन पर आने चाहिए। फिर आप मुझे बताइए कि वो पहला इवेंट कौन सा है जो पैकिटीन में होता है? What is the first event in पैकिटीन? And then can you tell me what exactly is a recombinase? And do you know, let me ask you 2 questions. Exchange of segments between non-sister chromatids of homologous chromosomes is called as. Now question number 2, exchange of segments between heterologous chromosomes is called as. So दोबारा सुन लीजिए 2 questions. Exchange of segments between non-sister chromatids of homologous chromosome, टर्म बताइए क्या है? Exchange of segments between heterologous chromosomes, टर्म बताइए क्या है? किस कंडीशन में जीन एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप में गई है? डू यू हैव द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लिंकेज फॉर विद यू? क्या आपको पता है जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स? और जीन्स का इनहेरिटेंस एक्चुअली इज द इनहेरिटेंस ऑफ द क्रोमोसोम. Do you know the theory that the wording of which would be something like this, that the behavior of the chromosome at the time of cell division actually decides the inheritance of the genes or allele? So we are looking at Pachytene. Pachytene, do you know the length of the Pachytene with respect to the other substages of prophase 1? What exactly is a very, very important event that is taking place here? How is it responsible for creation of variations? So meiosis will lead to the development of large number of variations. We are looking at the first mechanism by which variations can be created during meiosis. And do you know what exactly happens in Pachytene? So I hope this is absolutely clear. And then about diplotin. What will happen in the diplotin?
So what exactly happens in diplotin? Please tell me. Do you know that there is a dissolution of synaptonemal complex? And do you remember the line of your NCERT that there is a tendency of the homologues to get separated from each other? So do you remember that particular line as well? So this is a very, very important thing. So what would be the remnant of the recombination nodule where the crossing over had taken place, called as what cytological structure corresponds to the place where crossing over had taken place? So that means crossing over occurs in Pachytene, and this structure is actually seen in diplotin, and diplotin is after Pachytene. So this structure is not where the crossing over will take place. It is the place where crossing over had already taken place. Do you know what is a dictyotene stage? What is a dictyate? Do you know something about vertebrate oocytes? They are arrested during meiosis 1. Do you know the stage of meiosis 1 where these vertebrate oocytes may get arrested? Do you know, do you remember human reproduction? The female baby, when she is born, her ovary is containing all the future ova that she is ever going to produce. And in her ovary there are primordial follicle, and they have primary oocyte in them. They have begun meiosis 1 and they are arrested at meiosis 1, and the further development will actually occur after years after the onset of the puberty because of the release of GnRH. So do you know which stage they are arrested at? Do you know why the cell which is arrested here is making messenger RNA molecules which are not being translated? This will be a difficult question for you. So a cell which is arrested is still making messenger RNA, and strangely this messenger RNA is not getting translated into protein. So why is this cell making messenger RNA when it is not making any protein? What is the reason for that? So again, the term dictyotene, the term dictyate, the importance of the vertebrate oocyte, all these questions, they can come from this particular phase. And then diakinesis. What exactly is happening during diakinesis? Are the homologues still attached to each other? And don't you think that this will create a difference between the alignment of the chromosomes at the metaphase 1 plate from the plate that I told you in the last video in mitosis? And because the homologous paired chromosomes are still attached to each other at their ends, so what is going to happen? Only one of the homologue will be attached to the spindle from one end, the other homologue will be attached to a spindle from the other hand. And therefore, do you know that at anaphase 1 there will be no splitting of centromere? If you know this, you know meiosis. This is the reason why reduction takes place. So why centromere does not split in anaphase 1? How therefore it brings about a reduction in the chromosome number? Remember, do you still remember that till the time the sister chromatids are attached to the same kinetochore, they are part of one chromosome only. And what exactly migrate to the opposite poles at anaphase 1? So what is the difference between mitosis anaphase and anaphase 1 of meiosis? Make diagrams. Just try to understand the two stages simultaneously, and then you will understand how reduction is brought about. So this is very, very important. And then obviously there will be telophase 1, which will be followed by cytokinesis. There would be a dyad of cell that would be formed. What exactly is meant by a dyad of cell? So this is very, very important. And then there would be a gap phase that I was talking about between meiosis 1 and meiosis 2. What exactly is the term? How it differs from interphase? This comes to the same question again. This is very, very important to understand that something is not happening in this gap phase that was happening during two successive mitotic cell division, which is called as between two successive mitotic cell division, which was called as interphase. I hope this is absolutely clear. Now going further, there would be meiosis 2, and this meiosis 2 will be essentially similar to mitotic division. And do you know that in anaphase 2 there will be splitting of the centromere?
and then the chromatids will be separated, and this time the sister chromatids will move towards the opposite pole. Are you absolutely sure about these particular events? Now can I ask you, what is the physical basis of segregation? What is the physical basis of segregation, and what is the physical basis of independent assortment? Can you pinpoint the cell cycle stage which will be responsible for A, independent assortment, and B, segregation? Can you give me a physical basis of that? And do you clearly understand that the centromere does not split in anaphase 1, it splits only in anaphase 2? I hope this thing is absolutely clear. And finally, the significance of meiosis. And finally, those questions that they will ask you, that this is the complement of the cell at G1 phase, what will be happening at the end of the, say for example, meiosis 1, or the end of the anaphase 1, or the end of the anaphase 2? So can you see that anaphase 1 is still a single cell, and after cytokinesis of meiosis 1 there would be a dyad of cell, and anaphase 2 will again be a single cell. Still cytokinesis follows karyokinesis. Is it absolutely clear or not? So do you know that what is a disjunction of chromosome? What exactly is the term which will be called as disjunction of chromosome? And therefore, if you know that, what is a non-disjunction of chromosome? And non-disjunction of chromosome is a failure of the cell division machinery. Can you correlate with them, these particular events, the non-disjunction events, with, say for example, a change in the chromosome number? And if the change of the chromosome number is not exactly a base, is not exactly a multiple of the base number n, do you know that it is called as aneuploidy? And do you know about the aneuploid, say for example, sex aneuploids, Klinefelter syndrome and Turner syndrome, and autosomal aneuploid like Down syndrome? Do you know what exactly is the reason for Cry-du-Chat syndrome? So this is where I am bridging the two topics. I am bridging cell division and genetics here. And you can easily understand that the questions that I am asking are the beginning of the questions that will be asked to you in the genetics. This would be the chromosomal basis of inheritance. So I hope you are in a position of understanding what type of questions can actually be asked in NEET entrance exam from cell cycle and cell division. Please make note that in the last you must have a comparison between mitosis and meiosis. What are the various differences? What happen? How would the telophase differ? What would be the degree of decondensation of the chromatin? What happens to the nucleolus? What happens again to the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus? When does the centrosome replicate again for meiosis 2? These are some very important questions that may be tricky questions for you. You must have a clear understanding of them. So to the best of my capabilities in this short session, I have give you a feel of all the types of questions that can come in cell division. Read your NCERT. Before that, actually you can actually do one thing. You can actually go through all the questions that I have given in understanding NCERT and hear to their audio solutions. All these things you will find there. And then you go and look at the past year papers, and if possible, always I say that if time permits you, please go through the mastering NCERT, because that is when you actually master a particular topic and hence the examination. Thank you for your time. Thank you so much. प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।